So now we will see the question answers of 1.2 Dick Whittington and his cat. Okay. So talking about warming up session. Warming up session में सबसे सब question first क्या है? Discuss the following in groups and write the answer. कि ये जो world famous personalities है who had reached great heights, उनके बारे में आपको you have to write about their hardships or some problems which they might have faced in their childhood or in their youth, but still how they are world famous personalities. Okay. So first is about Apj Abdul Kalam. So we can write, right, that Apj Abdul Kalam, he lived in a small village in Rameshwaram. He had to sell newspaper at a young age to support his family, and you can write much more about it, right, that how he faced certain problems and how he entered into field of scientist. तो आप ये सारा चीज उनके बारे में लिख सकते हो. Second is Abraham Lincoln. तो Abraham Lincoln, he was born to poor parents, yeah. He lived in one room log cabin. ठीक है, कि एक log cabin जितना ही room में वो रहते थे. Though he was poor, he could not go to school. Okay. And he was mostly self educated, के उन्होंने खुद से ही पढ़ाई करके अपना एजुकेशन पूरा किया. और भी आप बहुत कुछ उनके बारे में लिख सकते हो. चार्ली चैपलिन, he was born to poor parents, ठीक है, who were singers. When Charles was still a little boy, his parents got separated. His mother had no means of income, and father, he did not provide any financial support. So since he was alone, he had to, like, he was sent to Central London District School for the poor when he was just 7 years old. So these all are famous personalities, but if you see, even they had faced problems in their childhood or when they were youth. So it's not like a person who is rich from the beginning is only one who can become successful. No. Kalpana Chawla. Kalpana Chawla, she joined Tagore Bal Niketan School in Karnal at a time when girls hardly enrolled in schools. ठीक है, कि जब लोगों को girls को इतनी पढ़ाई नहीं मिलती थी. At that time, she was enrolled in a school. When she was 10, she expressed her desire that she wanted to become an engineer. Her father dissuaded and advised her to take up medicine or teaching as a career. And उनके father ने बोला कि आप या तो medical या तो teaching को as a career लो. But no, she was determined and was the first girl who enrolled Punjab Engineering College for the aeronautical engineering program. और भी आप बहुत कुछ उनके बारे में लिख सकते हो. What strong qualities possessed by them could have helped them achieve success and fame all over. तो ये सारे जो famous personalities है उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी strong qualities रही होगी. तो it can be determination, hard work, perseverance, dedication, being focused, etc. तो ये सब आप लिख सकते हो. How do stories or biographies of such famous people help youngsters? कि ऐसे famous people के stories या biography हम जैसे youngsters को कैसे help कर सकती है? So we can get inspired through all of these famous people. We can motivate ourselves, we can encourage ourselves, or we can teach values to ourselves. आप और भी कुछ लिख सकते हो. These are some points which I thought I should write. Okay. If you have certain points to write, you can write it down. Next, syllably. A syllable or a syllably, जैसे you pronounce, it is a unit of pronunciation that has one vowel sound and may or may not have a consonant sound before or after it. ठीक है, कि एक vowel sound होता है और कभी consonant होता है या नहीं होता है. It depends. Now, examples of words saying it. Okay, so one syllable is a, I, see, at, on, man, वैसे. With two syllables, you have mother, you have seated, you have giraffe, and three syllables is happiness, wonderful, animal, and more than three syllables is consequently encouragement. अच्छा, ये part है ना, हम ज़्यादा describe कब करेंगे? When we will do grammar section, okay? When I will be teaching you grammar, उसको तब हम और भी elaborate करके पढ़ेंगे. Is it clear? Okay. Write down the name of any five of your classmates and write how many syllables each name contains. ठीक है, तो कोई भी आपको 5 लोगों का नाम लिखना है और उनके बीच में कितने syllables है.
वो आपको लिखना है. सो लाइक एक एग्जाम्पल है रोहन, तो रोहन ऐसे 2 हो गए. अंजलि 3 हो गए. तनीषा, तनीषा. सोहम, सोहम. प्राजक्ता, तो प्राजक्ता. अंडरस्टैंड. अभी आपको ये एग्जाम्पल देख के समझा होगा दैट व्हाट सिलेबली इज, व्हाट इज 1 सिलेबली, 2 सिलेबली. तो ये हो गया 2 सिलेबली, ये हो गया 3 सिलेबली. समझा बच्चा व्हाट डज इट मीन्स? Yeah, thank you. Textual questions. Now we will see the textual questions, okay? What innocent belief made Dick decide to go to London? के बेचारा हमें पता है Dick क्या था, एक innocent बच्चा था जिसको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. तो क्या वो एक innocent belief था कि उसको क्या लगा कि मैं लंदन जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा. So once we have seen, right, उसने once he overheard someone saying that in the streets of London it is paved with gold. And what did he thought that let me go there, let me pick up my fortune, and maybe if I become rich, people would treat me better. So this was the innocent belief which made him go to London. What hardship did he face on arriving in London? So we have seen as he arrived, it was nightfall. The Carter person, he lived him all alone. He was disappointed with that Carter person because he could see no golds on the streets, right? And then he could only see that the streets were filled with, the streets were entirely dirty and it had lots of unfriendly people, and also he had no place to sleep. So he spent his night entirely in the alley, and the next morning when he woke up he was cold, miserable and very hungry. But people wanted he was wandering around for the search of food, but people they keep shouted at him and started making angry bowls at him. मतलब क्या, वही उसके ऊपर भड़कने लगे, उसके ऊपर गुस्सा करने लगे. And at last he collapsed in the street as he was looking for food. समझा आंसर? Yeah. Next, how did Mr. Fitzwarren favor Dick? कि उन्होंने कैसे उसको help किया? We had seen, he said him that if you need food, if you are in search of food, then why don't you work? And then he ordered the cook that take him to the kitchen, and from now on he will work with us, but before giving any work, provide him any food. तो ये हम लोग ने देखा था. What difficulties did Dick has to face that Mr. Fitzwarren house? So we have seen there were 2 difficulties. First was he was very disturbed with the rats and mice. That was the first problem because he used to come only at night to sleep, and at night also they scampered all over him, which was a difficulty which he was facing. The other difficulty, the second difficulty, was the bad temper of कुक. ओके, कि कुक का जो बैड टेम्पर था, दैट वाज द सेकंड डिफिकल्टी. वो तो फर्स्ट डिफिकल्टी उसने इजीली ओवरकम कर लिया, बट जो सेकंड डिफिकल्टी थी, जो कुक थी, शी केप्ट शाउटिंग एंड स्क्रीम्ड ऑल डे ऑन द डेक, एंड वो उसको वुडन स्पून से हिट भी करती थी, नो मैटर हाउ हार्ड ही वर्कड. क्लियर बच्चा, समझा? ओके. हाउ डिड द कैट प्रूव टू बी यूजफुल? तो कैट कैसे यूजफुल हुई? कैट क्या करती थी, सारे रैट्स और माइस को चेस कर लेती थी, उनको खा लेती थी, एंड दैट इज व्हाई डिक जो था वो अच्छे से पीसफुली सो पाता था, एंड इसीलिए कैट वाज यूजफुल. व्हाट इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न बैक टू मिस्टर फिट्जवॉरन हाउस? तो वी हैव सीन कि वन मॉर्निंग डिक वाज वेरी अपसेट. ही डिसाइडेड टू गो बैक. ही वाज ऑन हिज वे विद द कैट, एंड व्हेन ही reached, he was just sitting on a stone to rest, and there he could see a church, and church ke bell ring ho rahe the because it was 1st of November, it was Saints Day, and wo message kya de rahe the, that turn away Whittington, you are the worthy citizen and you are the Lord Mayor of London. तो उसे लगा कि Lord Mayor of London, maybe यही मेरे नसीब में है, it is written in my fate, and that is why he decided that I would go back. If this is stored for me, then I am okay to, I am okay to handle few scoldings from the cook, and that is why he decided to go back. Why was the captain of the ship so overjoyed? Why he was happy? Because हमने देखा है the cat, she was an excellent mooser, and वो rats और mice को खा जाती थी, and इसीलिए कोई trouble rats और mice का होता नहीं था. Next, what happened when food was brought in at the palaces? And जब हमने देखा कि palace में food लाया गया था, तो suddenly क्या हो गया, rats and mice appeared
अपीयर हुए एंड जो नई कैट थी, जो डिक्की कैट थी, उसने क्या किया, उसने उनको इमिडिएटली पाउंस किया एंड डोजन को वहीं पे उसने खा लिया था. तो दैट वाज समथिंग व्हिच हैपेंड. Why was the queen afraid of the cat? Because she had seen how fiercely the cat attacked rat and mice, and that is why she was a little alerted, or you can say she was a little afraid. How much did the king pay for the cat? We have seen कि entire cargo तो उन्होंने खरीद ही लिया. At the same time, he was ready to pay 10 times the sum again. समझ रहा है बच्चा? सब समझ रहा है आंसर? Okay. What changes had the cat brought to Dick's life? So we have seen जैसे cat, she was a good mooser. उन्होंने पहले तो डिक को हेल्प किया. सबसे पहले क्या क्या चेंजेस उन्होंने डिक के लाइफ में लाए? तो सबसे पहले जब कैट को उसने लाया था, so since she was a good mooser, उन्होंने सारे रैट्स और माइस को खा लिए थे एंड डिक पीसफुली सो पा रहा था. फिर सेकंड क्या हुआ, जब बारबरी में जो प्रॉब्लम था, जो कंट्री पूरा प्लेग ऑफ माइस और रैट्स फेस कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी उसकी कैट काम आई. वो कैट काम आने की वजह से उसको क्या मिला, 10 टाइम्स ज्यादा सम मिला, अमाउंट मिला. एंड देन ही बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट. फिर क्या हुआ, उसने फ्रिट्जवॉरेन की डॉटर जो एलिस थे उनसे शादी कर लिया. 3 times he was elected as a lord mayor. Okay, and he was also in time he was knitted by the king and he became Sir Rich Whittington. So he was not only famous but he was popular too. तो ये सारी चीजें उसके लाइफ में कब हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैट, राइट? कैट आए और उनकी लाइफ चेंज हो गई. तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो. ठीक है. नाउ वी विल कम टू द वर्कशॉप पार्ट. अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर यू सी इन द नोटबुक. ठीक है, कि आपको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. अब सारे ही ऐसे है, तो वन विच वी सी इन डिक्शनरी, जो डिक्शनरी मेथड होता है ना बच्चा, एस में भी फिर अगर मुझे सेंट ढूंढना है या सैट ढूंढना है, तो मैं पहले ऐसे आई, फिर ऐसे टी, फिर ऐसे वी, ऐसे सारे सब हो गए, फिर ऐसी. अंडरस्टैंडिंग, जो डिक्शनरी मेथड होता है ना, वैसे आपको उसको अरेंज करना है. Next, remove the affix, that is prefix and suffix, and write the root word. ठीक है, कि यहाँ पे या तो prefix है या तो affix है, उसको आपको remove कर देना है और सिर्फ main root word आपको लिखना है. तो successful हो गया, तो यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया and which becomes success. Immediately हो गया, तो वापस मैंने ly निकाल दिया, इमीडिएट हो गया. रिट्रेस, तो मैंने पहले स्टार्टिंग का निकाल दिया एंड वर्ड बिकेम ट्रेस. समझ रहे हो? मूसर, तो मैंने अर निकाल दिया एंड इट बिकम्स मूस. अनफ्रेंडली, अन निकाल दिया, इट बिकेम्स फ्रेंड. और आगे का भी निकाल दिया, ली, तो इट बिकम्स ओनली फ्रेंड. आर यू गेटिंग व्हाट यू नीड टू डू इन दिस? या. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फ्रॉम द एले. ठीक है, आपको मीनिंग दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको मीनिंग दिया है ना, आपको उसका वर्ड निकालना है. अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ, तो हम लोग ने देखा वो क्या है, एटिक है. एक नैरो पैसेज बिटवीन टू बिल्डिंग्स, जहाँ पे डिक सोया था, दैट वाज एले. फिर the highest ranking officer in the municipality of a city or town, that is mayor. The highest ranking official who commands a ship, ship को command करने वाले कौन होते हैं? कैप्टन होते हैं. Any animal जो mice को catch करते हैं, that is known as mooser, and a low constant sound which is made by cat is known as पुर. ठीक है, तो ये सारा हमने मीनिंग्स देख लिया. अभी क्या है, आपको वर्ड्स दिए हैं एंड आपको उसमें से सेंटेंसेस बनाना है. तो ओवरकम, ओवरकम क्या है? आफ्टर अटेंडिंग द न्यू मैथ्स टीचर क्लास, आई वाज एबल टू ओवरकम माय फियर ऑफ द सब्जेक्ट. ओवरकम मतलब क्या, कि मैं उससे बाहर निकला, या मैंने उसको कैसे लाइक ओवरकम, कि मैंने उसको कैसे फेस किया, आप बोल सकते हो वैसे. पुट अप विथ, though my mom does not like it yet she has to put up with my younger brother tantrums. put up with मतलब क्या, कि आपको कोऑपरेट करना पड़ता है या आपको एडजस्ट करना पड़ता है वैसे.
और बार्गेन तो हमें पता भी, ये मीनिंग्स आप खुद के भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। अभी क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, यहाँ पे इवेंट जैसे जंबल वे में दिए हैं, आपको उसको रीअरेंज करना है। तो हमने पहले देखा कि पहले क्या हुआ, डिक ने क्या किया, अपना जो इंग्लैंड का विलेज था वो उसने लेफ्ट किया। फिर सेकंड क्या था, एक कार्टर मिला जो उसको लिफ्ट देता है लंदन जाने के लिए। फिर हमने देखा कि वो वहां पे होमलेस था, हेल्पलेस था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड हंगरी। तो ये सारी चीजें आपको जंबल्ड वे में लिखनी है। इसके लिए आप वापस एक बार चैप्टर 4 थ्रू करना, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपका ये एक्टिविटी भी हो जाएगा। ठीक है, थिंक एंड आंसर, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंजेस फॉर्चून, कि उसका फॉर्चून कब चेंज हुआ, जब उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से रिटर्न चला जाता हूँ फिट्जवॉरेन के घर पर, राइट। अगर वो फिट्जवॉरेन के घर पर जाता ही नहीं तो क्या वो कभी मेयर बन पाता, क्या उसकी कैट वापस जा पाती, नो। सो दिस वाज द डिसीजन व्हिच चेंज हिज लाइफ forever. What message does this story bring out for youngsters? के youngsters के लिए ये message क्या story लेके आती है? The message that this story brings out for the youngster is that we should always work hard and one day we will be able to enjoy the fruits of our labor, के हमें हमेशा hard work करना चाहिए and कभी ना कभी हमारे hard work का result हमें मिलेगा। ठीक है, वापस यहाँ पे सिलेबलीज है जो हम लोग ने देखा, बिलोंगिंग वर्ड है तो आपको उसको सिलेबली, कितने सिलेबली का है वो ब्रेक करना है। अनफ्रेंडली, एनीथिंग, सो दिस इज अगेन जो हम लोग ने पहले देखा है। अब हम देखेंगे कंपैरिजन, हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, सी फर्स्ट क्वेश्चन इज यतीन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यतीन इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे कौन सा वो एडजेक्टिव है, इट इज स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग कौन से फॉर्म में है, लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग कौन से फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फॉर्म में है। उसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्गर, और उसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। यही वहां पे यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, सी इन सेंटेंसेस या कंप्लीट द टेबल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमें उसका कंपैरिजन फिल करना है। आपको ग्रेट दिया है तो कंपैरेटिव फॉर्म होगा ग्रेटर, सुपरलेटिव फॉर्म होगा ग्रेटेस्ट। फेमस है, फेमस में फेमर और फेमस ऐसा कुछ नहीं होता है। सो फॉर फेमस वी ऐड मोर फेमस और हम डालते हैं मोस्ट फेमस। इजी है, इजियर, इजीएस्ट। बैड है तो बैडर, बैडेस्ट ऐसा नहीं लिखते। फॉर बैड वी राइट वर्स एंड वर्स्ट। पुअर है, पुअरर, पुअरेस्ट। लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। लिटिल, लिटलर, लिटलेस्ट ऐसे नहीं लिखते। वी राइट लेस एंड वी राइट लीस्ट। फॉर वर्दी वी राइट वर्दियर, वर्दिएस्ट। एंड फॉर पॉपुलर वी राइट more popular and most popular. And that is how you come towards the end of your